अगर
Hello everyone, very good evening. Good evening, ma'am. Good Good evening, evening, ma'am. ma'am. Very good evening. Please switch on your cameras. Hello Preeti, Rahul, Ravi, Rupali, Hello, Ritu. ma'am. How are you? Good, I'm good. Hello Rachna ma'am. Hello, ma'am. So, yes, great to see Good you evening, ma'am. smiling. Very good evening, very good evening. So this meeting is scheduled by MESC. MESC ने शेड्यूल किया है. वापस एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आ रही है MESC. Yes, ma'am. Excited for this training. Yes, yes, yes. So in some time MESC will also pitch in and then we will go through the training program. तब तक आप शेयर कीजिए कैसे चल रहा है सब लोगों का. How everything is going on. Any new things to share. Yes, Rahul, what you are doing now? कुछ नया चल रहा है? Is my voice audible to everyone? Yes, ma'am. Yes, yes. Great. मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है. नहीं नहीं, बस कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही थी मैं. Just 2-3 minutes more and we will start with the presentation. Sure, sure, Vipul sir. Sure. So just I'm starting within 5 minutes. Just waiting for some more trainers to join.
Everyone, just give me 2 minutes. Yes, once again, welcome everyone to the session and very good evening. Okay, Rahul, you have mic problem. No problem. Yes, very good evening, Anupam. Everyone, very good evening, and you can switch on your videos. Everyone, be on videos. Hello, Singavellu. Good evening, ma'am. Yeah, very good evening. Yeah, nice to see everyone. Good evening, ma'am. Yeah, very good evening, Jitul. Very good evening, Ravi. Yes, all others, please switch on your videos. Shortly, MASC will be starting with the session and then I will explain you about this training program. I know all are at office and some are at home, but again, just it is a short meeting where we will just understand about the new initiative and we will understand the benefits also. Let me take a nice screenshot once again if you have forgot the smile. So just smile everyone and let me take the nice screenshot. Everyone. Yes. And yes, from MSc, Rudransh also joined. So let me click one photo and screenshot. Let me take screenshot. Yes, smile everyone. Here we go.
Okay. Hello, good evening, teachers, trainers, and good evening, ma'am. Good evening. So we all are here for a short briefing on upskilling of trainers program, which we have recently launched, and I have shared few details on WhatsApp groups of yours. I hope you have already read the basic things about that program. But now I'm actually asking ma'am to start the session so that. Okay. Thank you so much, Rudransh. So I will just explain you the vision of the MESC, and this is the filling body. Just give me 2 minutes. Just you can drop your points. So let me share my screen, and here we go. So on behalf of Media and Entertainment Sector Skill Council, once again, I welcome everyone. All my dear trainers, I am really missing you a lot, and we had a really great journey last year. And I was remembering those days this year also. अभी मैं याद कर रही थी कि क्या बस हमारी वो जर्नी थी, और वो जर्नी में सारी ट्रांसफॉर्मेशन तो हो गई, सर्टिफिकेशंस हो गई, कितने भी जो भी डिफिकल्टीज आई, ट्रेनर्स ने बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट करके वी कंप्लीटेड ऑल द स्टफ, एंड यस एवरीवन हैज रिसीव्ड द सर्टिफिकेशन आल्सो. अभी ये सर्टिफिकेशन को कुछ लोगों ने अच्छी तरीके से मॉनिटाइज किया है, कुछ लोग अभी भी कुछ उसका यूटिलाइजेशन किसी किसी लोगों ने नहीं किया है. कुछ लोग कुछ इंस्टीट्यूट्स के साथ एज अ विजिटिंग फैकल्टी ज्वाइन कर चुके हैं. कुछ कुछ लोगों ने खुद की ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करके कुछ बैचेस खड़ी की है, और ये अपस्किलिंग की जर्नी में हम लोग एक नए पड़ाव में आगे बढ़ रहे हैं. नाउ कंसिडरिंग द गवर्नमेंट इनिशिएटिव, आपको पता है कि द NEP 2020 की जो पॉलिसी है, वेयर क्रेडिट रेटिंग सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड इन द academics also. So in academics, again, skilling becomes the very, very important aspect, and we get the credit point based on multiple skills. In the similar way, MESC, which is Media and Entertainment Sector Skill Council, is a government body. Basically, it is a government support body which actually designs the NSQF level curriculums which are industry aligned. Because our future vision of India is to do skilling so that all the skilled youths can contribute towards nation's growth. And yes, हम लोग भी सब लोग उसी विजन को अलाइन होके ये सब कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली वो हमारा फर्स्ट ईयर था. दैट वाज द पायलट प्रोजेक्ट दैट व्हाई गवर्नमेंट वांटेड टू सर्टिफाई दिस ऑल द ट्रेनर्स, एंड आफ्टर सर्टिफिकेशन exactly they were also exploring now how actually these trainers can contribute. So now the main motive is to get aligned with the industry. So now aspiration of the government is that the trainers should keep themselves updated. क्योंकि हमने लास्ट ईयर जब ट्रेनिंग किया था तो AI की डेफिनेटली शुरुआत थी, हमने भी AI का कुछ इम्प्लीमेंटेशन सीखा, बट दैट वाज जस्ट अ स्टार्ट एंड दैट इज एट द बिगिनर लेवल. बट अभी अगर हम लोग AI का इम्पैक्ट अगर देखेंगे तो इट हैज ड्रास्टिकली changed our lives, isn't it? So AI has impacted like anything. Everyone agrees? Yes, everyone in chat box. So the impact is actually, if we will consider and we will talk about the impact of the AI in positive terms, we can take it as we got a very smart assistant. But again, how many of you are worried about this AI transformation? सब लोग मुझे फ्रैंक आंसर देंगे. जिस तरीके से AI का रिवोल्यूशन हो रहा है, हर एक इंडस्ट्री में जो AI का इम्पैक्ट हो रहा है,
व्हाट डू यू थिंक कि कुछ डर भी लगने लगा है क्या बीच में कि नाउ हाउ वी आर गोइंग टू कोप अप विद दिस फास्ट मूविंग वर्ल्ड? Isn't it, everyone? Do you agree with me? Great, great, Prashant. You are already tech, Prashant. So that's the great thing. You are already techie, but I'm just asking all others who are not uh, techie, and basically every time they need to upgrade. So, yeah. So now, a very, very important aspect. Do you think parents and children are really worried due to this transformation? Or they are confused, which is the right term, whether they are worried or they are confused? Yeah, everyone. And what is the impact of confusion? Definitely it turns into worries because they are not able to take a right decision, isn't it? Yeah, so much clarity is needed. So you are digital marketers, you are with the AI, you are the trainers, and that's great that you are not fearing at all and you are coping up with this transformation. But again, the trainer's responsibility is also to train the students from the employability perspective which industry needs. तो इंडस्ट्री को जो एम्प्लॉयबिलिटी चाहिए उसके पर्सपेक्टिव से हमें ट्रेन करना। और इसीलिए आने वाले दिनों में कुछ ऐसे स्किलिंग प्रोजेक्ट करने की कोशिश गवर्नमेंट कर रही है जहां पे उनको ट्रेनर्स की जरूरत लगेगी, बट अभी के करंट ट्रेन में जो इंडस्ट्री में चेंजेस आ गए हैं, ये चेंजेस को अपडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेनर्स ने, और इसीलिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, विच इज बेसिकली कंडक्टेड बाय द इंडस्ट्री इटसेल्फ. So these trainers will be from the industry. So from trainer to industry leader. So as you are a trainer, but now you have to upgrade yourself and upskill yourself as a AI industry with the AI and industry expertise. So industry trainers will teach you. So ये प्रोग्राम में मैं नहीं सिखाने वाली हूँ. Definitely industry trainers will be there and they will teach us. So there will be trainers also and the master trainers also. Now the media and entertainment body basically industry के साथ align करके कुछ national skill qualification framework बनाती है where student gets the credit point और उसका NCVT का certification होता है. तो ऐसे कितने job roles है? There are number of job roles, but for this program, MESC has shortlisted 100 plus job role. और ये जो job role है आगे आने वाले दिनों में क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे, इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट है, ये हमें समझने मिलेगी. और ये इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के हिसाब से which skills they are looking for from the children's, that also they will elaborate on this. और ऐसे 100 जॉब रोल्स की आपको क्लैरिटी आएगी. यू विल अंडरस्टैंड द फ्यूचर ऑफ दिस जॉब रोल. अगर एक बच्चा उसमें स्किलिंग करता है तो फिर उसके लिए कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज प्लेट में है, और इंडस्ट्री के रिवोल्यूशन को वो इजी वे में कैसे कोप अप कर सकता है, एंड हाउ ही कैन कंट्रीब्यूट इन द सक्सेस स्टोरी ऑफ दैट इंडस्ट्री ऑल्सो. तो ये सारी चीजें सीखने को मिलेगी. अगेन जॉब रोल 100 है तो डेफिनेटली वी विल गेट द एक्सपोजर ऑफ ऑल, बट आपकी सबकी स्किल अलग अलग निश में है. सो डेफिनेटली यू कैन शॉर्टली इसकी कौन सी जॉब रोल के बच्चों को आप ट्रेन करना चाहते हो या कैसे अलाइनमेंट लाना चाहते हो, बट यू विल गेट दैट जिस्ट दैट एग्जैक्टली व्हाट इंडस्ट्री इज लुकिंग फॉर एंड हाउ यू नीड टू change your training approach. So government backed, this MESC is basically a government backed body, and it is a sector focus which covers films, televisions, OTT, animation, gaming, radio, live events and digital media domains. So MESC ये सारे domains को cover करता है, ये सारे sectors को cover करता है. And as I told you, ये सारे NSQF अलाइनमेंट के सारे करिकुलम डिजाइन करता है. एंड देन बेसिकली कि इंडस्ट्री और एकेडमिक
का ब्रिज तैयार होता है जहाँ पे करिकुलम डेवलप किया जाता है कंसिडरिंग द इंडस्ट्री, व्हाट इंडस्ट्री इज लुकिंग फॉर एंड व्हाट चाइल्ड शुड लर्न। तो इसका जो मिक्स एंड मैच किया है, बट एज अ ट्रेनर ये जो इकोसिस्टम हम लोग बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ द मूविंग फॉरवर्ड, सो basically for applying this program the minimal fees is charged. So ये प्रोग्राम अभी फ्री नहीं है। फर्स्ट अटेम्प्ट हमें अराउंड 14,000 का सर्टिफिकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट ने दिया था। अभी अपस्किलिंग के लिए हमें खुद के पॉकेट से 2,000 रुपीज भरने जरूरी है। सो 2,000 है। आई थिंक रुद्रांश इट इज इंक्लूडिंग जीएसटी, isn't it? Yes, ma'am. Everything is included in Yeah, that. okay. So 2,000 is including GST, so no other charges. And this program, I think it is on 14th and 15th of March, and shortly they will be sharing the timings also with the registered candidates. So you have to apply and then qualify. Again, you need to check that in which domain exactly you want to work. And again, there will be for 2 days TOT training program. Will it be a full day program or how it will be? Basically, we are having multiple sessions on both the days, and there will be 2 or 3 hours sessions, and per day there will be 2 or 3 sessions. So, Okay. yeah. So it is a full day workshop. So 14th also full day because 2-3 sessions will be there, and each session again it will be of 2 hours or 3 hours. So again we need to allocate the full day. So 14th and 15th full day training this will be, and it will be taken by the industry persons who are who has the expertise in it. And then after the TOT, what all will be the benefits? That also now for trainers, basically this is the again your profile will get upgraded. So you will get the MASC endorsement credential on your profile. Also now MASC in upcoming year in 2026, MESC is planning a drive for the skilling projects. So they are thinking that the trainers who will get updated with the current industry trends, they will basically give the opportunities with those assignment also. तो गवर्नमेंट के कई सारे असाइनमेंट MESC डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर है, एंड देयरफॉर अगर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती है तो फिर MESC ये हम आप तक भी पहुंचाएगा, बिकॉज दोज ट्रेनर्स हु आर अपस्किलिंग दे आर रियली रेडी फॉर द इंडस्ट्री, और वो एक्टिव भी है, वो कुछ कंट्रीब्यूट करना भी चाहते हैं, एंड देयरफॉर गवर्नमेंट वांट दैट दे शुड गिव अपॉर्चुनिटी टू यू पीपल. Yes, बच्चा पार्टी, व्हाट इज योर नेम? My name is Gaurav Mongia. या गौरव, व्हाट यू वांट टू आस्क? जी मैडम, एक्चुअली मैं आपसे ही मैं कोर्स किया हूँ वो ट्रेनर का, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर का, आपके हाँ. इंस्टीट्यूट से. अब ये चीज चाह रहे मैडम कि चूंकि मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है, HOD मैकेनिकल में रहा हूँ, 10 साल में रहा सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है. यही एक सिखाना काम चाह रहे करते हैं, तो हैं, इस सर्टिफिकेशन के बाद हम सिखा सकते हैं बच्चों को? सिखा सकते हैं, डेफिनेटली सिखा सकते हैं ना. ओके ओके गौरव, गौरव क्या करते हैं ना, लास्ट में क्वेश्चन आंसर लेते हैं Q&A, क्योंकि आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है थोड़ा सा, तब तक आप कनेक्शन चेक कीजिए. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. या थोड़ा वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका. सो नेशनल ट्रेनर कम्युनिटी एंड नेटवर्किंग, अभी भी एक्चुअली ये कम्युनिटी थोड़ी हमारी बन भी गई, लेकिन बहुत सारे लोग अपने अपने इसमें बिजी हो जाते हैं, तो बाद में मुझे भी उतना मौका नहीं मिला कि वो सारा सबको इकट्ठा करे, बट नाउ वी विल एग्रेसिवली वर्क टुवर्ड्स इट. एंड प्रायोरिटी विजिबिलिटी विथ इंडस्ट्री एम्प्लॉयर्स, इंडस्ट्री के जो एम्प्लॉयर्स है, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर डूइंग एवरीथिंग फॉर द एम्प्लॉयबिलिटी एंड स्टूडेंट शुड गेट द जॉब अपॉर्चुनिटीज. तो ये सारे जो एफर्ट्स है वो हमारे काम में आने चाहिए. एंड दिस ट्रेनिंग पार्टनर का मैं नहीं करूंगी बिकॉज ऑल आर ट्रेनर्स हियर, सो आई विल जस्ट स्किप दैट. एंड ये 2 दिन का जो अपस्किलिंग प्रोग्राम है, यहाँ पे इंडस्ट्री वाइड डिफरेंट AI टूल्स कौन से यूज किए जाते हैं, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे. नॉट ओनली दैट, न्यू एज मीडिया टेक्निक्स, सो OTT और डिजिटल प्रोडक्शन ट्रेंड्स,
या एआई की रिशेपिंग कैसे हो रही है, आने वाले दिनों में क्या आपको चेंज देखने को मिलेगा, एवरीथिंग यू विल अंडरस्टैंड. अगेन डेटा ड्रिवन लर्निंग डिजाइन, हाउ द एआई एनालिटिक्स टू पर्सनलाइज ट्रेनिंग एंड इम्प्रूव लर्नर आउटकम. सो ऑलरेडी हम लोग एआई का यूज कर ही रहे हैं, बट ऐसे कौन से एआई के टूल्स है एंड हाउ वी कैन अगेन डू द एनालिटिक्स ऑल्सो, एंड वी कैन वर्क ऑन एनालिटिक्स ऑल्सो कि कौन से यूज करने चाहिए, कैसे हम लोग ट्रैकिंग कर सकते हैं. ऑल दीज थिंग्स आर कवर्ड इन दिस. एंड अगेन all industries stalwarts will be live, so all these professionals are the mentors, they are industry experts, they will be live, and this is a live session. And you will get the participation certificate also, as well as you will get industry endorsed MESC certification, that you are aligned with industry standards, what is needed by that industry. And also future ready positioning you can do, and then in future you can actually plan to train the student from the perspective of future readiness. तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो. So what you walk away with, so definitely you will get the participation certificate, you will get the industry endo certification, you will get the AI tools competency, also you will get the industry network access and modern training techniques, and you can actually get the priority project eligibility. So in 2026 government is planning lot many projects, and you might get chance to become a part of that project if you upskill yourself with this certification. So now we are here to for the, there will be assignment opportunities, continuous learning, and master trainer pathway. आगे जाके if you want to become a master trainer like me, that also you can become once you upskill with industry standards, and there will be awards and recognitions. So there will be forums, and where the trainers who are really contributing, MESC will recognize them and will felicitate them. So all these opportunities and recognitions also come in your plate. So now the dates are 14th and 15th of March. So 14th and 15th full day sessions will be there. Online, these sessions will be held online, and the investment is including GST 2000 rupees. And last date to register is 25th February. So this is the last date. So you can register immediately within 2-3 days, and you can confirm your registrations. And now we are opening chat, and also you can unmute and ask your queries. Good evening, ma'am. Yeah, good evening. Ma'am, I'm Sonu Gupta speaking from West Bengal, Durgapur. हाँ सोनू. मैम वो जो ये एआई का जो कोर्स किया था उसका सर्टिफिकेट तो अभी तक मिला नहीं मैम. और दूसरा बात पूछना चाहता हूँ कि ये जो कोर्स है वो डिजिटल मार्केटिंग के बाद, ये कोर्स करने के बाद क्या क्या स्कोप हो सकते हैं? क्या क्या स्कोप हो सकते हैं? जी मैम. अभी ये सोनू, जो तुम्हारा जो एआई का सर्टिफिकेट है, 2 लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है. शायद तुम लोग का ना पहले मास्टर ट्रेनर में भी था ना सोनू? मैम वो ये एक बार चेक करना पड़ेगा. तो वो हम लोग अच्छा पर्सनली चेक करते हैं उसका क्या इश्यू है. अच्छा लेकिन ओके, लेकिन ये जो अभी अब ये जो सर्टिफिकेशन है, ये अपस्किलिंग करके, जैसे मैंने बताया कि ये लोग प्लान कर रहे हैं 2026 में कुछ जी इवेंट्स, तो उसका पार्ट बनने का मौका, फिर मास्टर ट्रेनर की आपकी एलिजिबिलिटी हो जाएगी कि अगर आपको चाहिए तो बाद में मास्टर ट्रेनर, जैसे मैं मास्टर ट्रेनर हूँ, तो मास्टर ट्रेनर की ट्रेनिंग कंप्लीट करके आप मास्टर ट्रेनर की भी सर्टिफिकेशन MESC से कर सकते हो, अगर ये प्रोग्राम हो गया तो. अभी आप ट्रेनर हो, टू बिकम अ मास्टर ट्रेनर विच इज अ ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम. आर यू गेटिंग माई? अच्छा तो ये ट्रेन द ट्रेनर यस प्रोग्राम हिस्सा बनने के लिए भी ये प्रोग्राम मैंडेटरी है, बिकॉज इंडस्ट्री अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है. और दूसरी जो बाकी की जो प्रोजेक्ट्स आते हैं ना, उसमें आपको प्रायोरिटी मिलती है. जब भी नई अपॉर्चुनिटीज आती है गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट MESC विल डायरेक्टली कॉन्टैक्ट यू फॉर दोज अपॉर्चुनिटीज.
और इंडस्ट्री में भी हम्म, जब इंडस्ट्री पीपल सिखाने वाले हैं तो एज अ जी। ट्रेन इंडस्ट्री में जब भी ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज है तभी ये लोगों हम्म, के साथ भी आप अटैच हो जाओगे. सो यू विल अच्छा, गेट ऑल द इंडस्ट्री पीपल इन दैट नेटवर्क. ओके, ठीक है मैम. ओके. Anyone else want to ask any doubt? Yes, ma'am. Ria this side. Yeah, Hello. yeah. Hi. I just want to know regarding this partners training. ये मैंने आपसे पहले भी शायद फोन पे भी किसका? बात training partners. हाँ हाँ If I want to Riya, be the Riya, training Riya. partner, Yeah, how yeah, to go ahead with that? yeah, Riya. So tomorrow I will again connect. We just missed on that. Sure, we will connect definitely. And actually, I just want to know, like, what is the future? What is the scope? Because till now, I'm not able to go on this government platform. Personally, You मतलब are कुछ there rules. on government platform, but again, there should be enough project where government can invite you people. So this was the pilot where government was trying to certify the trainers, and then they want to do the skilling on the masses. Okay. But Mm-hmm. still now it is a pilot, so it takes time to streamline. So don't worry, it will come in your plate in near days. Because execution is still pending. We are like, I'm already training few of the students nearby or tier two cities, but still I'm not able to provide them the certification. That was the reason why I just That's wanted what. to. Yes, Riya. So we will connect actually. I Very just well, ma'am. missed Riya later on. We will connect on that. Sure, ma'am. Looking forward to it. Yeah. Thank you. हेलो. Yes. अभी अरे मैडम आवाज क्लियर? हाँ. जी मैडम, मेरे को ये पूछना था कि जैसे हम लोग एआई का एक सेंटर बनाना चाह रहे हैं इंडस्ट्री की जो आवाज कट हो रहा है सर. आपका रिक्वायरमेंट आ वापस. अच्छा, आपका आवाज आवाज कट नहीं हो आ रहा पा है रही है सर. बिल्कुल. वापस वापस आपका कट हो रहा है आवाज. ठीक है, बहुत ही आवाज कट मैं हो फिर रहा इस मैसेज में पूछूंगा है. आपसे. आप एक हाँ मैसेज में पूछिए, मैसेज में पूछिए. So Rudransh, do you want to add anything? Yes, ma'am. There's one point which you have missed. So basically, we Media Entertainment Skills Council also have a learning platform or a series of webinars Yes. called Vidyadan. So basically, Vidyadan is a platform which was or it was an initiative by Shri Subhash Ghai, who was our second chairperson, and he is an renowned director and artist. So basically, it was an initiative which has a motive to reinitiate the Guru Sishya Parampara, which was in our Veds and the history of our Indian culture. So we are actually what we are actually doing through this, we are actually inviting various industry partners and the leaders who just came there and share their views and the learnings about their particular field, and that's how we actually doing this work also. Even ma'am have given multiple webinars on that. So ma'am can you please Yeah, so share? yes, Yeah. yes. So Vidya Dan is a concept. The name suggests it is Vidya Dan. So this is a portal which is established by MESC with the industry. The motive is the children's who are needy. Actually, they will get a help through this portal where Vidya Dan will be inviting all the industry leaders to share their knowledge.
सो जैसे आप अभी एक इंडस्ट्री में हो तो आपके पास जो टॉपिक है वो आप विद्यादान के पोर्टल पे शेयर कर सकते हो. तो देयर विल बी लाइव सेशन लाइक वी आर दिस सेशन इज हैपनिंग लाइव इन द सिमिलर वे. ये जो रीच है आपका वो पूरा इंडिया में हो जाता है बिकॉज विद्यादान पोर्टल पे बहुत सारे ऐसे नीडी स्टूडेंट है तो एवरीवन स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग यू. एंड विद्यादान पे जो भी ट्रेनर्स आते हैं उनका शोकेसिंग भी होता है. So you can portray that you was actually on the Vidyadan portal. So that also you can show on the profile also because this portal is the initiative of Mr. Subhash Ghai and already he has contributed a lot in this film industry and media and entertainment industry. So that validity also you get and also if you have a core knowledge you can share that knowledge on this Vidyadan portal and that will reach to the masses. And you can go through the portal again, you will get the idea. Here they are just trying to bridge the gap between Guru Shishya Parampara, and we are just inviting all the gurus, and there will be Shishyas, and they will be actually ongoing training. And going further, again, they are providing certain education to the students. So all the trainers who are there, they might get opportunity from there also, and some student will come to them also direct. So Vidyadan also you can actually go through. I will be sharing this recording, Liaquat, in the group as well, those who have joined late. So I request everyone, please complete your registrations. Only 2 days are left because they have to finalize the batch and the slots also. Hello, ma'am. Huh? Ma'am, I have one question. You just said training will be provided by the industry person. So that will be just a brief introduction because recently I have attended so many AI webinars. They just tell us about the AI tools. Okay. So what type of AI tools can you tell us? If you can tell us. Like what type of AI tools means this is a media and entertainment industry, no? So Yes, ma'am. whatever job opportunities are there in media and entertainment industry, not just from the perspective of digital marketing, but from the perspective of VFX, filmmaking, OTT. So this industry is moving forward with the AI's impact, and actually all the industry leaders will be covering all the tools which are currently used in this industry and what will be the future scope of this industry. So there will be multiple sessions, and in multiple sessions they will cover all the tools which are relevant to that particular industry, like for OTT or for filmmaking or television. Okay. So all Fine. that stuff will be covered. That will there will be the advanced course of AI. You are just telling me. It's not instead of course we can say we are just going to understand about the tools and how these tools are used in the industry, because these are industry professionals now. So as a trainer you are joining, no? So they will be guiding you that so that you can further guide student and teach students those tools. Ma'am, we are not the AI perfectionist, ma'am. Okay, we have just little knowledge of AI and we have some knowledge about the AI tools, and we will get information from the industry experts. Yeah, So, you will get the information about that so that further you can deliver that information to the students. okay, fine. That is the motive because we are the trainers. Okay, ma'am. Yeah. Ma'am, you'll be sending us the link for the registration? Yeah. Just Rudransh, please share the link to pay. Rudransh, are you there? Yes, ma'am. Please I'm just just share here. the link, Razorpay link to pay the
amount. And also you can just send the QR also. Those who can pay, they can actually, you can share QR here in the chat box also. Okay, ma'am. And you can also share UPI if you have. So basically, first, I'm sharing this Google form, which the trainers have to Take. fill, and then I'll be sharing the QR. Put everything in the chat box. So you can first fill up the form and also you can pay from the Razorpay link. This Razorpay QR is there. And then you can just preserve this link of the rocks. And also I will be sharing all these resources in our group also. So you can post the payment link. Already you posted the message, no, Rudransh? Yes, Group? ma'am. I have shared the creative for the program, and and there's a QR. So candidates can register by using that QR. Okay. So, so you can share this link in all the groups also. Sure, ma'am. This Razorpay link. And I will be sharing this recording in a group. So you people complete the registration by tomorrow and by today itself. Those who are paying, so current now you can register. 2 ही दिन है हमारे पास, 25 के पहले करना ही है, तो अभी आप कंप्लीट करो क्योंकि फॉर्म भी भरना है. Ma'am, will you share the link in the group? Yeah. We are sharing. Rudransh, please post a message in all the groups of TOT. हेलो हाँ, yes, Rahul. मैम, हमारे ऑलरेडी टीओटी का सर्टिफिकेशन है, तो फिर इसे करना चाहिए. अभी कैसे कि ये इंडस्ट्री में क्या रिसेंटली चल रहा है, ये अभी ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, तो मैं खुद भी वो ट्रेनिंग का पार्ट रहूंगी क्योंकि हमें वो मैंडेटरी होता है कि वो करना पड़ता है. बिकॉज कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स अभी जो 2026 में आएंगे तो इनकी जो प्लानिंग है उसके अराउंड चलती है, तो फिर हमें ये करना पड़ता है. आई विल बी ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट ट्रेनिंग. ओके. Yes, Sandeep, it is the same mail. So you can register. आपके साथ मैं भी रहूंगी वो ट्रेनिंग में. मैम इस कोर्स का कोई यूपी कोड जो होता है, और जैसे कि ये मैं डिजिटल मार्केटिंग एआई में था, वैसा कोई कीपी कोड नहीं है इसका? नहीं, उसका कोड नहीं रहेगा. ये ट्रेनिंग इनिशिएट किया है इंडस्ट्री और एमईएससी ने, गवर्नमेंट के इसके मतलब जो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर स्किल काउंसिल है और इंडस्ट्री, ये दोनों का कोलैबोरेटिव सर्टिफिकेशन आएगा, इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन.
इसका कोई कोड नहीं रहेगा. दिस इज नॉट NSQF अलाइन. दिस इज अपस्किलिंग प्रोग्राम फॉर ओनली ट्रेनर्स. Okay. Last time Shankar Mahadev and all. Yes. With the credentials of Shankar Mahadevan, sir. And Rudraj, will we get recordings also? Yeah. Okay. Thank you, Ria. Just Ria has confirmed the payment. Rudraj, confirm from your side. Yes, ma'am. Students will will get the recordings as well. Recordings also you will get, na? Yeah. So you will get the recordings. I'll just confirm. Yes. Okay, Ravi. And see you everyone in the training. Thank you, ma'am. Yes. Yeah. And thank you, trainers, for joining this meeting. Thank So, you. yeah, thank you everyone once again. Just switch on your videos and say bye-bye so that once again one more screenshot we can take. Yes, nice smiles. Oh, So kindly share the QR code in group. yes. We will be sharing QR code in group. Already the brochure is shared where QR is there. Once again, just one more time we will just post only QR for the payment. Okay. Okay, so should we conclude, everyone? Thank you all of you for joining. All the best, everyone, and see you all in training. Thank you, ma'am. Yeah.